According to Carson, the bandwidth of FM signal, the bandwidth of FM signal is twice the sum of frequency deviation and modulating frequency. Is it clear? So mathematically we can write the bandwidth of FM signal. Mathematically we can write the bandwidth of FM signal twice the sum of del F plus FM. Twice the sum of del F plus FM. What is the unit of bandwidth? What is the unit of bandwidth here? Frequency, that means hertz. Okay. So if we take FM as a common part, so what we can write? Twice of FM. So what we can write? Twice of FM. Del F upon FM plus 1. Or what is the ratio of frequency deviation and modulating frequency? Frequency, modulation index. Clear? Now, what is the value of frequency sensitivity in the case of what is the value of sensitivity in the case of frequency modulation? Del F into KF into AM. KF into AM. Oh, sorry, ये तो हमारा KF होगा. How can we calculate frequency deviation? Frequency deviation equals to KF into AM. So KF equals to del F upon AM. This one is known as frequency sensitivity. Okay. And the ratio of frequency deviation and modulating frequency is known as frequency deviation. And frequency deviation is represented by either beta, or we can write it as M of MF. Frequency deviation can be written as beta or modulation index. Modulation index can be written as MF or beta. Modulation index can be written as MF or beta. So we can write this expression as twice of FM beta plus 1. Twice of FM beta plus 1. So this one is the theoretical bandwidth. This one is the theoretical bandwidth of FM. This one is the theoretical bandwidth of FM. This one is the theoretical bandwidth of FM. Okay. हम डायरेक्टली एफआई भी लिख सकते हैं ना? क्या? हम एफआई भी लिख सकते हैं ना डायरेक्टली एफएम प्लस डेल्टा एफ इक्वल टू एफआई. Instantaneous frequency. Instantaneous frequency is FM plus delta. Okay. The relation to calculate the bandwidth is 2FM into beta plus 1. Achha. There are the two types of FM. First one, there are the two types of FM on the basis of modulation index. NBFM and WBFM. When the value of beta is very less than 1, at the time FM is known as NBFM. Is it clear? Now, if we consider the FM signal as NBFM, suppose the FM signal is NBFM, so at that time, what is the value of beta? Less than 1. If the value of beta is very much less than 1, so we can neglect the value of beta. So what we can write? We can write 2FM only. So what is the bandwidth of NBFM? 2FM. And what is the band? And in the case of WBFM, the beta value is greater than 1. So we can't neglect beta at the time of WBFM. Okay. So in any question, if someone is asked to calculate the bandwidth, so first you have to find out the signal is in the form of NBFM or it is in the form of WBFM.
Is it clear to all of you? You can note down bandwidth equals to 2fm bracket beta plus 1. नीचे लिखिएगा. In the case of NBFM, 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 value of beta is less than 1. Value of beta is less than 1. So bandwidth equals to. So bandwidth equals to. So bandwidth equals to twice of FM. So bandwidth equals to twice of FM. And in the case of WBFM, and in the case of WBFM, it will be same, है ना? WBFM की केस में जो हमारी बैंडविड्थ है वो ये थी. क्लियर बात यहाँ तक? नोट कर सकते हैं. So in the case of WBFM, it will be same. It will be same. Okay. Okay. Now, next heading is FM generation. FM generation methods. Next heading is FM generation methods. FM generation methods. FM generation methods. FM generation methods. To generate FM signal, we can use various techniques. We can use various methods. To generate FM signal, we can use various methods. To generate FM signal, we can use various methods. To generate FM signal, we can use various methods. All these methods are basically divided into two parts. All these methods are basically divided into two parts. All these methods are basically divided into two parts. First one is direct method. And the second one is indirect method. First one is direct method, and the second one is indirect method. First one is direct method, and the second one is indirect method. Direct method is there are the various methods that can be categorized under the direct method, but mainly there are the two types. First one is known as reactance method. And the second one is known as Varactor diode. Second one is known as Varactor diode method, or it can also known as parameter variation. Reactance method. First one is reactance method, and the second one is Varactor diode method or parameter variation method. The important method under the indirect method is Armstrong method. The second method is known as Armstrong method. Armstrong method. Okay. Now, why it is known as direct method, and why this method is known as indirect method? Why these two methods are known as indirect method? Why these two methods are known as direct method, and why this method is known as indirect method? We know that in FM
modulation, the frequency of carrier signal varies according to modulating signal. Okay, so if in any method, if in any method the output frequency directly varies according to the input signal that is provided, so that method is under the category of direct method. क्लियर बात? इसमें ये जो हमारा मेथड है, इसमें कोई भी जो भी हमारा आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी ना, जो भी हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो डायरेक्टली वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द सिग्नल दैट इज प्रोवाइडेड एट द इनपुट साइड. क्लियर बात? बट इन इनडायरेक्ट मेथड ऐसा नहीं होगा. इसमें ऐसा क्या होगा? इसमें ऐसा होगा कि जब भी हमें एफएम सिग्नल जनरेट करना होगा ना बेटा, तो सबसे पहले हम जनरेट करेंगे एनबी एफएम सिग्नल. क्या जनरेट करेंगे? एनबी एफएम सिग्नल. ठीक. So to generate the FM signal, first we generate the NBFM signal. Then by increasing the modulation index of NBFM signal, we will generate WBFM. And actually, the WBFM signal is known as FM signal. The WBFM signal is known as FM signal. Okay. So if we want to generate the FM signal, so in indirect method to generate FM signal, first we generate NBFM signal, and then by increasing the modulation index, we will generate the FM signal or WBFM signal. But here we can directly generate the WBFM signal or FM signal. Is it clear to all of you? So there are the two methods that is responsible to generate FM signal. First one is the reactance method, and the second one is the Varactor diode method. Varactor diode method is also known as parameter variation. Clear बात? आपके सिलेबस में सिर्फ यही वाला मेथड मेंशन है. क्लियर बात? आपके सिलेबस में सिर्फ एक मेथड मेंशन है, दैट इज डायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड आविष्कार. ठीक है? चलो. सो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा Varactor diode method और parameter variation method. फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा Varactor diode method और पैरामीटर वेरिएशन मेथड और डायरेक्ट मेथड. आपके एग्जाम में कैसा भी पूछा जाए, डायरेक्ट मेथड, पैरामीटर वेरिएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, पैरामीटर वेरिएशन मेथड और Varactor diode मेथड, आपको सभी में यही मेंशन करना है. सर क्या? सर बॉटल में आप लोग साथ में बना लीजिए. यस. फिर आपको और वेट करना पड़ेगा. फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 ऐसे करके इसको बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा. ये ग्राफ फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है? कुछ भी है, अब ये सब बनाते जाइए, ये सब डायग्राम बनाते जाइए, मैं एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको रीड कर लीजिए.
कहाँ पे CD directly proportional to 1 upon under root BD and CD equals to K upon this one is K. CD equals to small k upon under root B. Okay. अब थोड़ा लेट करना चाहिए। देखना चाहिए कोई बात नहीं ये 5 मिनट मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या फिर आप लोग बना लीजिएगा 10 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आप लोग बना लीजिएगा ठीक है नहीं तो नेक्स्ट टीचर आ जाएंगे तो देखो this one is the indirect method this one is the direct method this one is the direct method or we can say Varactor method or we can say parameter variation so in these methods what is happening if we provide the access signal to any element suppose we are considering here that element is VCO if we provide any input signal to any element suppose I am considering the element as VCO stands for voltage controlled oscillator it means that which parameter is controlled and which one is controlled voltage controlled oscillator it means that here it means that in VCO the output frequency oscillating frequency is controlled by the input voltage so there is one device known as VCO in this device when we provide the access signal that means we are providing the voltage here okay so when we provide voltage so its frequency will be changed okay so if the frequency will be changed so we can say if we use VCO in any method if we use VCO voltage controlled oscillator in any method so we can by changing the value of modulating signal we can directly change the frequency of the signal is it clear okay so in this method I am considering the element as Varactor diode this one is highly sensitive diode it works on the reverse bias. Is it clear? So this one is the symbol of Varactor diode. So Varactor diode
Varactor diode is basically working on the reverse bias. Varactor diode is basically working on the reverse bias. So suppose this one is the PN junction Varactor diode. Okay. So when this diode is in the reverse bias condition, when this reverse when we connect negative terminal, when we connect negative supply with the positive terminal and we connect the positive supply with the negative terminal, so at that time this Varactor diode will be in the reverse bias condition. And when any diode is working on the reverse bias, so at that time it's a decreaser, the joint between the p region, p type semiconductor and n type semiconductor forming a diffusion region. Okay. So when the reverse bias is when we apply the diode in the reverse bias condition, so at that time the diameter or we can say thickness of the this diffuser region will be increased. According to the variation, according to this relationship, we can say if the value of the diffuser region is increases, so at that time this capacitance is also changes. Okay. So in the reverse bias condition, when any diode or we can say when Varactor diode is working on the diffuser working on the reverse bias, at that time its capacitance is continuously changed. Okay. So this one is the relationship. This one is the relationship between the input that is reverse bias input that is provided and the output capacitance of the Varactor diode. Okay, this one is the relationship between the input voltage that is provided in the diode and the capacitance that generated in the Varactor diode. Okay, there are the two types of capacitance. First one is known as diffusion capacitance, and the first one is known as depletion capacitance, and the second one is known as diffusion capacitance. Okay, always the value of the reverse bias capacitance, or we can say always the diffusion capacitance, the value of the diffusion capacitance is higher as compared to forward bias capacitance. Okay, so I am considering only the diffusion capacitance or the reverse bias capacitance. So this one is the relationship between the diffusion capacitance and the applied voltage. If we eliminate this proportionality sign, so we can write it as CD equals to K upon under root V. Okay, it means that if we increase the value of the value of the VD, so accordingly this reverse bias capacitance decreases continuously. Okay. Now this is the characteristic. This is the characteristic of Varactor diode in the reverse bias condition. When I am providing the reverse bias voltage, so accordingly the capacitance will be decreases continuously. Okay, so this is the reverse bias characteristic of the Varactor diode. Now there are the two circuitry. Of Varactor diode method to generate FM signal. First one is this one, and the second one is this one. आप लोग कोई भी बना सकते हैं एग्जाम. ये वाली जनरली बुक में दिया रहता है, ये वाली मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता दोनों सही. Clear? अब ध्यान दीजिएगा. This one is the Varactor diode. This one is the Varactor diode, and it works only in the reverse bias. Okay, in reverse bias capacitance, its capacitance value is very high. So the capacitance of this Varactor diode is represented as CD. The capacitance of this reverse bias is represented as CD. And the voltage, this V naught is known as biasing voltage. This V naught is known as biasing voltage. एंड ये जो हमारा V नॉट की वैल्यू बेटा इसको हम लोग कैसे सेट करते हैं, इसको हम लोग सेट इसके अकॉर्डिंग करते हैं ताकि ये जो हमारा कैपेसिटेंस है हम इसे रिवर्स बायस करें. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? दिस वन इज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बायसिंग कैपेसिटेंस. क्लियर बात है तक सबको? तो यहां पे हमारा V नॉट है. दिस वन इज द एम्प्टी दैट मींस AM मैसेज सिग्नल और वी कैन से AM cos टू FMT. ठीक, इसका वोल्टेज क्या होगा? इसका वोल्टेज AM होगा. बात यहां तक क्लियर है? इसका वोल्टेज V नॉट होगा, इसका वोल्टेज तो ओवरऑल जो भी हमारा वोल्टेज, अगर मैं इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज है अगर मैं उसको VD कहना चाहूं, सो दिस VD इक्वल्स टू AM प्लस V नॉट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, so I am setting the value of this biasing voltage is somehow the capacitance will be the in reverse bias condition. Okay, हम लोग इसकी वैल्यू को इस टाइप से सेट करते हैं कि ये जो हमारा कैपेसिटेंस है, ये जो हमारा Varactor डायोड है, ऑलवेज हमारा रिवर्स बायस कंडीशन. इज इट क्लियर नाउ? तो जैसे जैसे जब यहाँ से हम लोग जब वोल्टेज इतना प्रोवाइड करेंगे, जैसे अगर इस टर्मिनल का वोल्टेज इस टर्मिनल के कंपैरिजन में अगर ज्यादा पॉजिटिव है तो हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बायस में आ जाएगा. अगर यहाँ का जो भी पोटेंशियल है यहाँ की पोटेंशियल के कंपैरिजन में कम है तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस में आएगा. क्लियर बात है? तो बेटा हम लोगों ने इस बायसिंग वोल्टेज के थ्रू यहाँ पे रिवर्स बायस वोल्टेज प्रोवाइड किया. रिवर्स बायस वोल्टेज के थ्रू इस सीडी में चेंजेस आने स्टार्ट हुए. क्लियर बात है? ओके. Now this one is known as tank circuit. This one is known as
टैंक सर्किट। अच्छा, जब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं या कोई भी मॉड्यूलेशन करते हैं तो हमें कितने सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है? हाउ मेनी सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड? Two signals are required. How many signals are required? Two signals are required. First one is the carrier signal and the second one is modulating signal. So modulating signal I am provided with this end and the capacitance value or the frequency we are provided from this end. ओके तो हम लोगों को पता है कि कभी भी अगर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी जनरेट करना होता है, फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑसिलेटर। क्लियर बात है? तो यहाँ पे एक एलसी ऑसिलेटर का यूज किया है। ठीक बात यहाँ तक समझ रहे हैं? इसको हम लोग एक टैंक सर्किट भी कहते हैं। दिस वन इज द टैंक सर्किट। तो हम लोग यहाँ से कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं। क्लियर बात है तक बेटा? तो यहाँ से हम लोगों ने कैरियर फ्रीक्वेंसी हमारे सर्किट में आ गई है, यहाँ से हमारे सर्किट में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी आ गई है। बात तक क्लियर? ठीक। तो जैसे जैसे हम लोग इस एमटी को वैरी करेंगे, इस मैसेज सिग्नल को वैरी करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? देखो, we know that how can we calculate the frequency of ये ये अभी नहीं बनाया ना किसी को? इधर का बनाया क्या? चलो इधर पे देखो, इधर कई बार कीजिए फिर बाद में बना लीजिए। देखो सब, हाँ देखो, any frequency is calculated by fc equals to 1/2 pi under root of lc if the circuit is the combination of inductance and the capacitor। कभी भी बेटा अगर हमें हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी होती है ना, हम हमेशा एट दैट टाइम वी कैन यूज द एलसी फिल्टर ओनली। अगर लो फ्रीक्वेंसी में जनरेट करना है तो वी कैन आल्सो यूज द आरसी फिल्टर, है ना? लो फ्रीक्वेंसी के आरसी, हाई फ्रीक्वेंसी के एलसी। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? 2 pi under root LC। Now here the value of the inductance is L0 and the value of the capacitance is C0। Is it clear? तो हम यहाँ पे मेंशन कर दिए, this one is L0, this one is C0। Is it clear? Now अगर if the value of the massive signal will be changed, so according to this value the value of this capacitance will also change, and this capacitance is in the parallel of this capacitor. This capacitor CD is the parallel of this combination. So if any capacitor is connected in the parallel, so at that time we can write its parallel combination as clear बात, कोई दिक्कत किसी को? चलो तो अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को फिट करता हूँ 2 pi under root of L0 और ये क्या है C0 और यहाँ पे क्या है CD की वैल्यू क्या है? डिप्लीशन कैपेसिटेंस और डिप्लीशन वोल्टेज में क्या रिलेशन है? K1 under root of is it clear to all? It means that जैसे जैसे ये VD की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे इस FC की वैल्यू चेंज होगी। और ये VD की वैल्यू कैसे चेंज होगी? इस VD की वैल्यू कैसे चेंज होगी? क्योंकि यहाँ तो हमने सिर्फ बायसिंग सेट करने के लिए रखा है, इसलिए वोल्टेज लगाया ताकि ये हमेशा रिवर्स बायस में वर्क करे। बात समझ में? ये कांस्टेंट वोल्टेज है जो हमने इसलिए लगाया है ताकि ये हमारा रिवर्स बायस में आ जाए। और उसके बाद जैसे जैसे हम इसको चेंज करेंगे ओवरऑल वोल्टेज चेंज होते जाएगा। अगर ये ओवरऑल वोल्टेज चेंज होते जाएगा बेटा तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो हमारा कैपेसिटेंस है ये चेंज होते जाएगा, और अगर ये कैपेसिटेंस चेंज हुआ तो हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। आता है समझ में? So this one is the relationship that shows how the input voltage depends, how the output frequency depends on the input voltage. Okay, so note down the relationship. Note down the relationship between the frequency. Note down the relationship between the frequency and the input voltage. Yes. First, note down the relationship between the frequency and the input voltage. अच्छा एक तो ये वाला सर्किट मैंने समझा दिया। अगर ये वाला सर्किट जनरली बुक में बना रहता है देखो ये भी सेम कुछ दिक्कत नहीं इसमें। ये आप लोगों को समझ में आ गया? एलो क्या है? एलो सर ये एलो सी क्या है? ये दिस वाज द टैंक सर्किट, दिस एलो इज द इंडक्टर, दिस सी इज द कैपेसिटर। द कॉम्बिनेशन ऑफ एलो एंड सी इज नोन एज टैंक सर्किट और एलसी फिल्टर। क्लियर बात है तक? ये क्यों यूज किया गया? यहां पे क्यों यूज किया हमने? हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए, कैरियर सिग्नल जनरेट करने के लिए। ऐसा क्लियर? यहाँ पे भी वो वैसे ही हम लोग यहाँ पे इनपुट इस साइड से प्रोवाइड किए थे, ये वाले सर्किट में इनपुट यहाँ से प्रोवाइड किया ऑडियो सिग्नल, दैट मींस मैसेज सिग्नल। क्लियर बात? सो वी आर प्रोवाइडिंग द मैसेज सिग्नल फ्रॉम दिस एंड। ठीक सर, एलसी तो फिल्टर ही है। ओ सॉरी एलसी फिल्टर, ये एलसी फिल्टर भी यूज होता है बेटा और हमारा एलसी ऑसिलेटर भी होता है।
ऐसे आप लोग ऑसिलेटर पढ़े कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में? क्रिस्टल ऑसिलेटर, कॉलपिट्स ऑसिलेटर, ये सब नहीं पढ़े? देखो देखो बेटा, कभी फ्रीक्वेंसी जनरेट करना होता है ना, तो उसके लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं, उसका नाम होता है ऑसिलेटर। बहुत टाइप के ऑसिलेटर होते हैं। जनरली ये बनते हैं तीन कंपोनेंट से, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, है ना। जब हमें लो फ्रीक्वेंसी जनरेट करना होता है तो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस यूज करते हैं, जब हमें हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करना होता है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इसी के अलग-अलग कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कॉलपिट ऑसिलेटर है कि क्लैप ऑसिलेटर है या हार्टले ऑसिलेटर है, बहुत सारे अलग-अलग टाइप के ऑसिलेटर्स होते हैं, है ना। तो कभी भी अगर हमें यहाँ पे तो ये टैंक सर्किट या ऐसे ऑसिलेटर बना दिया गया है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि कभी भी प्रैक्टिकली जब हम कैरियर सिग्नल जनरेट करना होता है तो उसके लिए हमेशा क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज किया जाता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्यों क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज किया जाता है? क्योंकि वो बहुत ही स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कंटीन्यूअस वेरी होती रहती है ना, तो ये स्टेबल नहीं, ठीक है। लेकिन ये एक मेथड है, इसमें ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे जैसे ये वीआर क्या है, ये जैसे यहाँ पे वी नॉट क्या था, क्यों प्रोवाइड किया गया? क्लियर बात। वैसे ही हम लोग यहाँ पे मैसेज सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे ट्रांसफार्मर मैसेज सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा, ठीक। तो ये जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा उसके कारण ये जो हमारा कैपेसिटेंस होगा वो फॉरवर्ड रिवर्स बायस में आ जाए। हमें कुछ ना कुछ तो उसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा ना, ताकि यहाँ पे जो वोल्टेज आए ऐसा वोल्टेज मिले कि मेरा जो कैपेसिटर है वो रिवर्स बायस में, ठीक। तो उसके लिए हमारा वोल्टेज यूज किया, क्लियर बात। दिस वन इज द बायसिंग वोल्टेज और दिस वन इज द बायसिंग कैपेसिटर। इट बायसिंग कैपेसिटेंस के लिए यूज किया गया है इस डायोड को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिवर्स बायस, ताकि ये जो हमारा कैपेसिटर, ये जो हमारा डायोड है वो रिवर्स ये हाँ ये हाँ, तो यहाँ पे तुम इसको नेगेटिव पॉजिटिव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा डिपेंड करेगा कि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या जनरेट हो रहा है। हमें ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बेटा सपोज यहाँ पे -3 वोल्ट है, तो मुझे यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा -5 वोल्ट। बिल्कुल यहाँ पे भी रहेगा। ये टोटल डिपेंड करेगा कि हमारा इनपुट सिग्नल का वोल्टेज किस रेंज में, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्यों किया है? अच्छा, आप ये नेगेटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, बोल रहे हो? हाँ, तो चेंज कर सकते हैं इसको, पॉजिटिव नेगेटिव ये वेरी कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि हमारे इनपुट सिग्नल है ना, ये पॉजिटिव ऑडियो सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। बिल्कुल, जब हम लोग जो भी सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, उसका जो भी हमारा इनपुट सिग्नल जो भी है, जो भी हमारा ऑडियो सिग्नल है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक रेंज पता चलेगी कि ऑडियो सिग्नल है पॉजिटिव रहेगा या कोई दूसरा सिग्नल तो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाए, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइस स्टार्ट करने से पहले हम इस बायसिंग वोल्टेज को सेट करेंगे। समझ में आया? सपोज अगर स्टार्टिंग में मुझे पता चल गया कि ये जो हमारा वोल्टेज है ये हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव तक इसका स्विंग हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करके रखेंगे। अगर हमें पता है कि ये पॉजिटिव तक ही है तो इसकी वैल्यू टोटल हम लोग नेगेटिव सेट करके रखेंगे, ताकि ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है हमें नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे, बात समझ में? तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे नेगेटिव इसलिए रिप्रेजेंट किया हूं मैं ताकि आपको ये समझा सकूं कि मैं जो भी इनपुट वोल्टेज दे रहा हूं उसको कम कर दे रहा हूं, और इतना कम कर दे रहा हूं कि ये जो डायोड है मेरा वो रिवर्स बायस में चला जाए। क्लियर बात? ये दिस वन इज द बायसिंग कैपेसिटेंस, दिस वन इज द बायसिंग कैपेसिटेंस। अगर हायर करंट जनरेट होगा तो वो उसको ग्राउंड कर देगा। दिस वन इज द आरएफसी, ठीक। ये हमारा इंडक्टर से बनती है, कॉइल से बनती है ना। ये हमारा हीट डिसिपेशन जो होता है, अगर ज्यादा करंट फ्लो होता है तो उसको करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो हमारे आरएफसी इज नोन एज रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल, आरएफसी इज नोन एज रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल, ये हमारे करंट कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है। अगर ज्यादा करंट आएगा तो उसको कंट्रोल करेगा बेटा, ऐसे कंट्रोल करेगा कि हीट डिसिपेशन में ना हो, बराबर ना। क्लियर बात हमारे समझ में? अब जैसे हम हमारा मेन पर्पस क्या है, इतना सब बनाने का मेन पर्पस क्या है, ताकि इसको हम क्या कर सके, क्लियर बात, मेन पर्पस ये है। तो जैसे हमने इसको रिवर्स बायस किया तो हमें यहाँ पे सीधी मिल गई, क्लियर बात। अब ये क्या है, सीसी इज नोन एज कपलिंग कैपेसिटर, सीसी इज नोन एज कपलिंग कैपेसिटर, सीडी इज नोन एज बायसिंग कैपेसिटर, क्लियर बात। ये कपलिंग कैपेसिटर क्यों यूज किया गया? टू कपल टैंक सर्किट विद द मेन सर्किट, है ना। इस हमारे इस टैंक सर्किट को या ऑसिलेटर सर्किट को अपने मेन सर्किटरी के साथ कपल करने के लिए हमने यहाँ पे कपलिंग सर्किट यूज किया, ठीक है। तो जैसे जैसे ये इसकी वैल्यू चेंज होगी तो according to the changes in CDM, the overall capacitance will be changed, है ना। जैसे जैसे हमारी CD की वैल्यू चेंज होगी तो ओवरऑल कैपेसिटेंस चेंज होगा, ओवरऑल कैपेसिटेंस चेंज होगा तो जो भी आउटपुट मुझे यहाँ पे मिलेगा वो आउटपुट भी हमारा चेंज हो जाएगा,
बात समझ में? तो बस इतना ध्यान रखना, जब इस ब्लॉक की स्टडी करोगे तो हम इनपुट इस साइड से प्रोवाइड करना है, जब इस ब्लॉक की स्टडी करोगे तो इनपुट इस साइड से प्रोवाइड करना है। ठीक है, मेन पर्पस ध्यान रखना, हमें इस डायोड को वैरेक्टर डायोड को रिवर्स बायस में ले जाना है। जैसे रिवर्स बायस में जाएगा हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी, जब कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी तो ये जो इसका ओवरऑल कॉम्बिनेशन है उससे हम लोग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को चेंज करना है। दैट्स इट। ठीक, जल्दी से ओके, थैंक यू सो मच। जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन है, किसी को कुछ डाउट है, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब कैसे करोगे आज की अटेंडेंस के लिए?